हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिट सेकेंड ही कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के क्रैश कोर्स की, जो कि है सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये है पार्ट 6। सो लेट्स सी कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं: गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नीड असेसमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद goals. Just a minute. Yeah. So organizational training programs in organizational psychology have several key goals aimed at improving the overall functioning and effectiveness of an organization. And these goals include, तो पहला गोल देखते हैं। पहला गोल है एनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल। ये प्राइमरी गोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज इम्प्रूव करनी होती है एम्प्लॉयज की। इसमें टेक्निकल स्किल्स भी आ सकती हैं जो कि उनके जॉब रोल से रिलेटेड हैं। सॉफ्ट स्किल्स भी इंक्लूडेड हो सकती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इन स्किल्स को एनहांस करके एम्प्लॉयज को बेटर किया जाता है, उनको प्रोफिशिएंट बनाया जाता है, प्रोडक्टिव बनाया जाता है। दूसरा है एम्प्लॉय मोटिवेशन और एंगेजमेंट इंक्रीज करना। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज कर सकते हैं और एंगेजमेंट, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए। जब एम्प्लॉयज को फील होता है कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अपने काम की तरफ ज्यादा कमिटेड और डेडिकेटेड होते हैं। फिर थर्ड है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना। तो ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स को डिजाइन किया जाता है करंट और डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल के बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए। बेसिकली करंट लेवल एक एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल 8 है, बट उसको 10 तक पहुंचाना है। तो वो जो 8 से 10 तक का जो गैप है उसको जो फिल करने के लिए जो ट्रेनिंग नीडेड होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। स्किल डेफिशिएंसीज को एड्रेस करके, टारगेट डेवलपमेंट को प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देख सकती हैं, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी और एफिशिएंसी मिलेगी। फोर्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एनहांस करना। तो बेसिकली कम्युनिकेशन एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ट्रेनिंग प्रोग्राम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पे काम कर सकते हैं सारे लेवल पे, चाहे फिर वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, कोलैबोरेशन के लिए हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए हो। तो अभी हम और गोल्स पढ़ते हैं। ये अभी हमने 4 पढ़े, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है, फैसिलिटेटिंग चेंज मैनेजमेंट। Organizational training can be particularly valuable during periods of change, like it can be restructuring or implementing new technologies. So, what does organizational training do? It basically helps employees adapt to new processes, procedures, and organizational cultures. फिर सिक्स्थ क्या है, लीडरशिप स्किल्स बिल्ड करना। इफेक्टिव लीडर्स बहुत नेसेसरी होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक कंपनी सक्सेसफुल रहे। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं पोटेंशियल लीडर्स को, उनकी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करके और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन प्रोवाइड करके। सेवेंथ क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रमोट करना। तो बेसिकली इस अगर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे हम पॉजिटिव और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रमोट कर सकते हैं। कैसे, रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इन सारी वैल्यूज को एम्फेसाइज करके एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन दोनों बढ़े। फिर क्या है, एनहांसिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ट्रेनिंग जो है वो बेटर टीम वर्क प्रमोट करती है और कोलैबोरेशन इम्प्रूव करती है एम्प्लॉयज के बीच में, जिससे इनोवेशन बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज इम्प्रूव होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर। फिर नाइन्थ क्या है, एम्प्लॉय का वेलबींग इम्प्रूव करना, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और ओवरऑल एम्प्लॉय हेल्थ और
एम्प्लॉय हेल्थ को इम्प्रूव करना, बर्नआउट रिड्यूस करना, तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। और लास्ट क्या है, अलाइनिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दोनों चीजों पे फोकस करते हैं कि इम्प्लॉय का खुद का गोल क्या है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर दोनों को अलाइन किया जाता है। ये अलाइनमेंट इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय अपनी इम्पोर्टेंस समझे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं नीड्स असेसमेंट पे। तो नीड्स असेसमेंट बेसिकली सिंपली सिस्टमैटिक प्रोसेसेस होती हैं जिसको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और जस्टिफिएबल डिसीजंस बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स असेसमेंट जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है एनालाइज करने की, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स क्या है स्किल गैप की टर्म्स में, कि वर्कफोर्स में कहाँ कौन सी स्किल में कमी आ रही है, या फिर डिजिटल नीड्स क्या है कंपनी की, या फिर ऑपरेशंस में क्या कमी है। ये सारी चीजें एनालाइज करने की जो प्रोसेस है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स असेसमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट ले डाउन करता है एक इन डेप्थ एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लैक कर रही है, और फिर एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करना इन गैप्स को फिल करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एनालिसिस बिजनेस को हेल्प करती है एक कॉम्पिटिटिव एज गेन करने में, असेस करके, एनालाइज करके, डायग्नोस करके एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को। इट कैन ऑल्सो हेल्प एम्प्लॉयज एंड प्रोसेस टू बिकम फ्यूचर रेडी। Organizational needs analysis consist of three important parts. और ये तीन important part क्या है कि organizational needs क्या है, what are the organizational needs, who in the organization needs it, और किसको organization में इनकी ज़रूरत है, and how to make it available। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों पे organizational needs analysis focus रखता है। फिर हम आगे देखते हैं। As a precursor to decision making, needs assessment are unique from other strategic processes and requires a performance perspective that focuses on the results to be accomplished rather than numerous alternatives activities that may be implemented. Consequently, needs assessment do not start with any solution in mind, not training, Six Sigma, success planning, mentoring, or any of the hundreds of activities that are used to improve results. Rather, needs assessment set out to determine what results must be accomplished and then make recommendations about what activities, typically combinations of activities, will be most useful to achieve those results. As a result, needs assessment rely on broad set of common tools and techniques for collecting information and decision making, many of which are also applied during or after as an activity for monitoring or evaluation purposes. From focus group and interviews to card sorts and fishbone diagrams, most of the tools used in a needs assessment are not unique to the process, but rather it is the before a decision is made perspective that is applied to each tool that defines the value of a needs assessment. These unique characteristics of needs assessment set it apart from many other disciplines and processes. Then the last topic for today, which is organizational analysis. So in organizational psychology, organizational analysis is referred to a systematic examination of various aspects of an organization to understand its structure, functioning, culture, and performance. It involves using psychological principles and methods to assess and improve the effectiveness of an organization and its workforce. Organizational analysis plays a critical role in diagnosing issues, identifying areas for improvement, and implementing strategies to enhance overall organizational performance. Analyzing the organizational structure involves examining how the organization is divided into departments, teams, and reporting lines.
This assessment helps identify whether the structure supports efficient communication, decision making, and coordination among different units. Job design and role analysis. Understanding job roles and responsibilities is crucial for optimizing individual and team performance. Organizational analysis involves evaluating job design to ensure that roles are clear, meaningful, and aligned with organizational goals. Organizational culture. Here, assessing organizational culture involves understanding the shared values, beliefs, and norms, which basically influence employees' behavior, attitude, and a very positive and supportive culture is needed to foster employee engagement and productivity. On the other hand, a toxic culture may hinder performance and collaboration. Then comes let's understand leadership analysis. So this analysis includes evaluating effectiveness of leadership within the organization. This involves assessing the leadership style, communication pattern, and the impact of leadership on employee motivation as well as satisfaction. Analyzing communication processes helps identify potential bottlenecks and breakdowns in information flow. Effective communication is vital for transmitting organizational goals, sharing feedback, and promoting teamwork. Conducting surveys on focus groups can help measure employee satisfaction and engagement levels. Understanding employee sentiments helps identify areas of improvement and potential sources of dissatisfaction. Evaluating the effectiveness of the organization's performance management system ensures that goals are set appropriately, performance is evaluated fairly, and employees receive constructive feedback and support for development. So, we have finally covered all the three topics for today, but there are few more things in organizational analysis which I would like to tell you. So these are: analyzing the training and development initiatives helps determine if they align with employee needs and organizational objectives. It ensures that the workforce is equipped with the skills and knowledge necessary for their roles. Overall organizational effectiveness is assessed by analyzing key performance indicators related to productivity, efficiency, and financial performance. Organizational analysis helps in identifying barriers and challenges during periods of change. Understanding employee reactions and concerns enables effective change management strategies. By conducting a comprehensive organizational analysis, organizational psychologists can provide valuable insights to leaders and management, leading to data driven decisions and targeted interventions to improve organizational functioning and employee. Sorry, यहाँ पे I forgot to mention employee satisfaction. Okay, to improve organizational functioning and employee satisfaction. So we have covered uh, all the three topics for today. So first we understood goals of organizational training program, in which we studied 10 goals. First one was enhancing employee skills, then increasing employee motivation and engagement. Third is improving employee performance. Fourth is enhancing organizational communication. Fifth is facilitating change management. Sixth is building leadership skills. Seventh is promoting positive organizational culture. Eighth is enhancing teamwork and collaboration. Ninth is improving employee well-being. And 10th is aligning individual and organizational goals. Then we studied about needs assessment, which is basically the systematic process used for collecting information and making justifiable decisions. It is about analyzing an organization's need in terms of skill gaps in the workforce or digital upgrade or operations, any aspect of the organization basically. It helps employees and it basically helps employees to become future ready.
Then we studied about organizational analysis, in which we studied that it is basically the systematic examination of various aspects of an organization so that we can understand its structure, functioning, culture, and performance. It, it uses psychological principles to improve effectiveness of an organization and all the employees of a particular organization. It plays important role in diagnosing issues. Then we studied about how job roles and responsibilities, understanding job roles and responsibilities is crucial for optimizing individual and team performance in an organization. Then we learned about organizational culture, where we understood that assessing organizational culture involves understanding shared values, beliefs, and norms which influence employee behavior and attitude. Then we learned about leadership, that we need to identify the leadership style. Then we understood the importance of communication. Then conducting surveys or focus group is also involved in organizational analysis. And then we understood that overall organizational effectiveness is assessed by analyzing key performance indicators, KPIs, which are related to productivity, efficiency, customer satisfaction, financial performance. So basically, organizational psychologists can provide valuable insights to leaders and management by doing this organizational analysis, which leads to better decision making and also targeted interventions so that the organization can improve as well as its employees. So I hope everything is clear till here. So yeah, that is it for today's video. If you have any doubt, please do ask in the comment section. Thank you so much for watching the video. I will see you all in the next video.